नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव शांडिल, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली। आज हमारी चर्चा का विषय है GERD, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, जिसमें कि जो हमारा एसिड है वो एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल मात्रा में हमारे इसोफेगस या खाने की नली में आता है। उसकी वजह से हमें जलन होती है और कई बार खट्टे डकार आते हैं और कई बार सुबह सुबह सांस लेने में तकलीफ भी होती है, मुंह में कड़वा पानी आता है। ये एक बहुत कॉमन इशू है और कभी ना कभी जिंदगी में ऑलमोस्ट सभी को होता है और एक टाइम पे लगभग 25% आबादी जो है हमारी इससे ग्रसित रहती है। इसके मुख्य कारण जो है वो खान पान, मोटापा और हमारे आहार विहार, सोचने की क्षमता, शक्ति, जिसे जो मर्जी कह लीजिए, आपका जो हमारा जो जिसे कहते हैं कि हमारा सोच विचार है, उससे काफी फर्क पड़ता है। आमतौर पे इसके लिए अगर कोई जवान आदमी हो तो हमें टेस्ट ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे कम करने वाली दवाइयां देनी होती हैं। अगर उससे फायदा हो रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करनी पड़ती है। पर अगर किसी की उम्र ज्यादा हो और हमें कोई और प्रॉब्लम की का अंदेशा हो, जैसे कैंसर वगैरह, तो हमको एंडोस्कोपी जरूर करनी चाहिए। और कई लोगों में अगर ये रिफ्रैक्टरी हो जाए कि फायदा नहीं हो रहा है कुछ भी करने से, तो हमें एक तार डाल के अंदर एंडोस्कोपी मैनोमेट्री से कहा जाता है। उससे ये देखा जाता है कि कितना एसिड है जो ऊपर आ रहा है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कई लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारे फूड पाइप और पेट के बीच जो वैल्व होता है उसको टाइट किया जाता है। आजकल इसके लिए हमारे पास एंडोस्कोपी विधियां भी हैं, जिसके कई तरीके होते हैं, 3-4 तरीके, और हमारे पास अवेलेबल है। किसी को जरूरत है इस चीज की तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जरूरी जो चीज है इसमें, 70-80% लोग दवाइयों पे या अपने खान पान को ठीक करके इसे ठीक कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये है कि हमें चाय कॉफी का सेवन कम करना चाहिए। खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, कम से कम लेने चाहिए जिनको ये तकलीफ हो रही है। मैं बोलता हूँ अपने लोगों को, चाइनीज फूड, चॉकलेट, चीज, चाय, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब चीजें जो है वो शायद इस रिफ्लक्स को बढ़ाती हैं। अल्कोहल का सेवन भी बढ़ाता है और ओकेजनल, हालांकि हम किसी भी हालत में इससे ये तो नहीं कह सकते कि आदमी को लेनी चाहिए, पर कभी कभी जिसको प्रॉब्लम होती है उसको इसे कम लेना चाहिए, सेवन कम कर देना चाहिए। और जब लेटते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि हम दाएं तरफ न लेटे, बाएं तरफ लेटे और सीधा लेटे, पेट के बल न लेटे और दाएं तरफ न लेटे। और कई लोगों में ये फायदा तब भी होता है अगर रात को वो अपने सिर वाले हिस्से को 30 डिग्री पे उठा कर रखें, क्योंकि जब हमारा पेट और फूड पाइप एक ही लाइन में होते हैं तो उस टाइम पे रिफ्लक्स ज्यादा होता है। अधिक मोटापा जब होता है तो एसिड ज्यादा रिफ्लक्स करता है, ऊपर की तरफ आता है और हमारे को जलन भी होती है और खट्टे डकार भी आते हैं सुबह के टाइम। तो इसलिए मोटापे को कम करना बहुत जरूरी है। खान पान की चीजें जो इसको बढ़ाती हैं उनको कम करना जरूरी है और दवाइयों की जरूरत जिसे है उसे लेनी चाहिए। पर जैसे ही दवाई असर कर जाती है पूरी तरह से, अगर कम कर सके तो कम करनी चाहिए। पर अगर किसी का दवाई बंद करने पे असर कम हो रहा है और उसको जरूरत है तो दवाई बहुत सेफ है। इसके बारे में कई स्टडीज आई हैं 5-7 सालों में पिछले, कि उन्होंने ये कहा है कि लॉन्ग टर्म दवाइयों से बहुत गंदे असरात होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को जरूरत है और उसको तकलीफ हो रही है, पहले हमें इफेक्ट चाहिए, साइड इफेक्ट की बात हम बाद में करते हैं। तो ये दवाइयां बंद नहीं करनी चाहिए अगर जिसको जरूरत है। पर ये देखना जरूरी है कि अगर आपको बंद हो सके तो अच्छी बात है, बिना जरूरत के इस दवाई को लगातार नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही लगातार लेने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब मरीज आता है हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तक, वो ये दवाइयां जो एसिड कम करती हैं कि हम ये ले रहे हैं बड़े टाइम से, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा, या हम ऐसे ही ले जा रहे हैं, वैसे हमको कुछ तकलीफ तो नहीं होती। तो दोनों सूरत में से हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इन दोनों चीजों के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन
लेना बहुत जरूरी पड़ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 70-80% लोगों में तो ये चीज दवाई से ठीक हो जाती है, पर कई लोगों में एक हाइड्रोसर्नियन तकलीफ हो जाती है, जिसमें कि मोटापे की वजह से या किसी और वजह से स्टमक का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाता है, चेस्ट में, इसोफेगस में, फूड पाइप की तरफ, और फिर उसको और दवाई से फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसका ऑपरेशन भी करना पड़ता है। अगर वो छोटा है तो हम एंडोस्कोपी के लिए उसको कई बार पिन लगा के या उसको टाइट करने की कई विधियां हैं, तो उससे करते हैं। पर अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो फिर हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है उस सूरत में, जबकि दवाइयाँ या आपके लाइफस्टाइल की जो तरीके हैं वो मदद नहीं कर रहे और आपको लगातार ये तकलीफ जो है ये हो रही है। इसका ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है कि अगर अनकंट्रोल्ड रिफ्लक्स रहे, मतलब आपका एसिड लगातार आया जा रहा है, तो 20 सालों के बाद कुछ एसिड की वजह से ऐसे चेंजेस भी आ जाती है इसोफेगस में, जिससे कि इसोफेगस का कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज थोड़े देर के लिए तो ठीक है, पर ये लगातार अगर चल रही है, आप दवाई नहीं खा रहे, इसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, तो फिर आप बड़ी बीमारियों को भी दावत दें। इसके बारे में मोटे तौर पर तो मुझे यही बातें कहनी थी, और अगर कुछ इसके बारे में सवाल होंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। Yeah, so Adhira's question is that are there any lifestyle changes I can incorporate to lessen my GERD symptoms? Which do you recommend first? So Adhira, I have actually talked about the lifestyle changes only, mostly, apart from the medicine that we give for reducing the reflux. So lifestyle changes are the foodstuffs that you have to minimize or eliminate. That is excessive tea, coffee, citrus fruits जो कि खट्टे होते हैं, chocolate, peppermint. Probably these are the foodstuffs that you have to eliminate or minimize. Second thing would be that don't take your dinner between 2.5 hours. You should take your dinner at least 2.5 hours before you go to bed. So don't lie down when you take food. Take small frequent meals. You shouldn't be taking food more than 3 hours apart. Between 3 hours, you should be eating something at least. You can take a banana, you can take a sandwich, whatever, but you should not keep your stomach empty for a long period of time, except for the fact that it is empty when you are sleeping in the night. So small frequent meals, no heavy dinner, and avoid dinner at least before 2.5 hours going to the bed. Avoid those foodstuffs which promote reflux, can make the head end go slightly up at 30 degrees in the night, and try to sleep on your left or straight. Don't lie on your tummy, and don't lie on your right side, because on the right side, when you lie on the right side, the stomach is in the straight line with the esophagus, and the reflux happens at that time. And if you are in that position for 6 to 8 hours at night, there will be a lot of reflux, and you'll have problems with the morning. And that's about all. All these things should be combined together. What are the benefits of my treatment options? The risks. So, first treatment, most of the patients are anti-secretory medications which reduce the acids. So they are quite safe in people who are requiring them, and you can take them for a very long period of time, but try to minimize as early as possible when your symptoms are under control. If the symptoms are not under control, even with the highest dose of the medicine which the doctor has prescribed, then you have to go for an endoscopic option or a surgical option. Surgical option is to make a wrap around the stomach, around the junction of the stomach and the esophagus, so that there's tightness there and acid doesn't reflux back. Before that, before making a wrap, you have to do a manometry test of the esophagus contraction. If the esophageal contractions are less, the wrap has to be slightly, it has to be less tight, but it can be tighter if the esophagus contraction is good. And you also, if you don't want to go for surgery, these days endoscopic options are also being available. There are 3 or 4 options that we are in the
pipeline. They have not established modalities as such, but sooner, maybe in a year or so, there'll be enough data with us so that we can offer them for a select population for long-term control of reflux. Mind you, these treatments can also be offered to people who don't want to take long-term medication. And risks are minimal. Small amount of bleeding. If you burn that area or clip that area a lot, you can have slight difficulty in swallowing sometimes, but these are manageable and they are not life-threatening side effects. What symptoms or signs should I look out for? Yes, so 3 basic symptoms that you have are regurgitation, reflux, and chest pain. Thereby meaning heartburn, यानी कि छाती के बीच में जो जलन होती है, that is the important symptom. Second is that you don't feel any burning, और जलन यहाँ पे नहीं हो रही होती, बट आपको लगता है कि नीचे से कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर की आप जैसे लोग बोलते हैं गैस सिर पे चढ़ रही है, तो that is also a symptom complex which tells you about reflux happening. The third is chest pain. Sometimes जो esophagus की हमारी लाइनिंग होती है उस पर जब एसिड आता है उसकी वजह से हमें चेस्ट पेन भी होती है. हमें ऑब्वियसली वी हैव टू रूल आउट कि ये कोई हार्ट की अलामत या चेस्ट की और कोई चीज तो नहीं है, पर अगर वो नहीं निकलती, जिसको नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहा जाता है, देन रिफ्लक्स कैन बी एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस चेस्ट पेन. सो चेस्ट पेन, हार्टबर्न एंड रिगर्जिटेशन, ये तीनों चीजें जो है, these symptoms are the 3 most common important symptoms of acid reflux. And if it's a long-standing reflux and some people unfortunately develop cancer, then you can have difficulty in swallowing also, and the food doesn't go down, and you have to go for advanced tests, and that is about all. We lose weight. Okay, definitely. This is an important question by Thanvi, that losing weight will definitely reduce your GERD, because the hiatus hernia, which happens in most people in adulthood, happens because of excessive weight, and especially the weight around your tummy. The pot-bellied that we Indians are mostly, we don't have much fat or much bulk in our upper body part, but we have a belly which comes over when we enter our middle age. That produces a lot of reflux, that makes the valve which prevents the reflux from the stomach into the esophagus looser, and when it becomes loose, the reflux happens. So that is why losing weight is one of the important criteria for lessening your symptoms of reflux. What is the exact weight to be lost? Ideally, you should be hitting your normal weight. What is your normal weight? Simple formula is your height in centimeter, just subtract 100 from that, and round about that should be your maximum weight. If it is 4 to 5 kgs lesser than that, better it is. So if you are, say, about 170 centimeters, your ideal weight should be somewhere around 67 to 68 kgs, and if you are 180, maybe about 75. If you are 80 also, then also it's adequate. But yes, even if you are too fat, too obese, then even if you lose about 8 to 10 kgs, that is going to help. Okay, so Muskan has asked, what complications could occur if my GERD doesn't improve? So the biggest and the most dangerous complication that we are usually talking about is the development of cancer, but that happens over a period of time that takes decades. Other things are, you can have, because of acid, there can be some kind of stricture development. Stricture is because there is some swelling happening because of acid in the esophagus, and because of swelling, the esophagus contracts, and there can be a narrowing in the esophagus, and you can develop dysphagia, जिससे कि आपका खाना जो है आराम से नीचे नहीं जाता, और आपको अगर अल्सर डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लक्स, एसिड ऊपर आने से, उसमें से कई बार ब्लीडिंग भी हो सकती है, और कई बार आपको वॉमिटिंग्स भी लगातार हो सकती है. तो ये चीजें हैं, वॉमिटिंग्स होना, कई बार उसमें खून आना, खाना निगल ना पाना, और अल्टीमेटली कुछ डेकेड्स के बाद कैंसर की डेवलपमेंट. दीज आर आई थिंक 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट
complications of GERD. Some people also have symptoms related to throat, so recurrent sore throat, and some of them may end up with pneumonias also if micro aspiration happens, क्योंकि हमारा एसिड ऊपर की तरफ आता है, रात के जब हम सोए होते हैं, हमारा जो सांस लेने वाली श्वास प्रक्रिया है उसके थ्रू हमारे ब्रोंकस में वो एसिड जाता है और वहां जाके वो एक रिएक्शन करता है, उसकी वजह से हमें निमोनिया तक भी हो सकता है। सो ये 5-6 चीजें हैं जो हमें रिफ्लक्स की वजह से हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका रिफ्लक्स कितना ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या सिम्टम और कितनी इंटेंसिटी से कितने ज्यादा होते हैं। Could medication I take be causing my GERD symptoms? Yeah, definitely. There are certain medications which relax the esophageal sphincter, like some medications which are taken for blood pressure, like candesartan and all those things. And there are certain inhalers also which reduce the lower esophageal sphincter pressure. So the sphincter is loosened, and a loosened sphincter could lead to reflux. And esophageal motility is also disturbed, and that is actually causing GERD symptoms. There is a long list of medications. If you ask particularly, then probably drugs which some of the drugs for blood pressure, some of the drugs for arthritis, some of the drugs for asthma. These are the drugs which can exacerbate your GERD symptoms. But if they are necessary, don't stop them. You have to take precautions, and you have to take anti-acid medication to control your symptoms. Yeah, so Elango has asked, will antacids help my heartburn? Definitely they will. If you are having off and on symptoms, antacid should be the way to go. But sometimes they don't. So you go for drugs like omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole, because they are potent acid suppressants, and they will reduce your acid to that level that it doesn't reflux. Even if the reflux is happening, it will be less in acid, so you will not feel the heartburn. You will have non-acidic reflux, so you will have the feeling of regurgitation, but not heartburn. But the point to make here is that if you are taking these medications, you should try to minimize them as early as possible. और जब वो हम उसको कम कर सके, whenever they are being tapered, उसके बाद भी अगर हमें कभी भी हार्टबर्न होता है, खासकर कभी ज्यादा खा लिया या ऐसी चीज खा ली जिससे कि हमें जलन होती है, छाती के अंदर हार्टबर्न हो रहा है, तो उस टाइम पे एंटासिड जरूर हेल्प करते हैं। और खासकर अगर हम एंटासिड लगातार ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो 15 से 20 मिनट खाने के बाद लेने चाहिए, बिकॉज वो एक परत बना देते हैं खास तरह के एंटासिड खाने के ऊपर। तो जो अगर खाना रिफ्लक्स भी करता है तो उसके ऊपर एक परत बनी होती है एंटासिड की, और वो फिर यहाँ पे हमारे फूड पाइप में जलन नहीं करती। So Shobna has asked, what other tests or procedures will I need if my heartburn does not go away? Okay, the first test is an endoscopy, in which you will find there are some ulcers or erosions, like जिस तरह एक खरोच पड़ जाती है उस तरह की होती है वो, जहाँ पे हमारा फूड पाइप हमारे पेट को मिलता है, उसको हम इरोसिव इसोफेजाइटिस कहते हैं। अगर वो है तो हाँ, हमारा एसिडिटी जो है वो है, और अगर उसके बाद दवाइयों से वो ठीक नहीं होता तो हमें मैनोमेट्री टेस्ट और 24 आवर स्टडीज करनी होती है पीएच देखने के लिए कि कितना पीएच जो है हमारा 24 घंटे में। पीएच आप जानते हैं कि जो पीएच जो होता है वो जितना पीएच कम हो उतना एसिड ज्यादा होता है। तो अगर एसिड पीएच हमारा बहुत कम हो रहा है रात के टाइम में किसी भी टाइम 24 घंटे में, तो इसका मतलब हमारा बहुत ज्यादा एसिड जो है ऊपर हमारा एसोफेगस में आ रहा है। उस टेस्ट को 24 घंटे के लिए किया जाता है। एक सिंपल सा टेस्ट है, एक तार हमारे नाक के थ्रू डाली जाती है, फूड पाइप जहाँ एंड होता है उससे थोड़ी सी ऊपर रखी जाती है, वो ये सेंस करती रहती है कि कितना एसिड जो है हमारे पेट से फूड पाइप में आ रहा है, और उसके बेसिस पे या तो हम दवाई का डोज बढ़ा सकते हैं, या अगर दवाइयाँ कारगर नहीं है तो हम एंडोस्कोपिक या सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्फिंक्टर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो टाइट हो जाए और एसिडिटी जो है या ऊपर की तरफ जो एसिड का आना है वो कम हो जाए। So Siddharth Rihani has asked that can heartburn be a sign of cancer? Yes, it can be a heartburn sign of cancer, but in a very select few population. I won't say
anybody presenting less than maybe 40 to 45 years, uh, less than 40 to 45 years of age would be presenting with cancer. It's a cancer of probably sixth to seventh decade of life, if not more. So if you have long-standing reflux, then probably you can have reflux. You can have heartburn as a sign of cancer, and then you may go in for a CT scan first or an endoscopy first. That is depending upon कि आपकी स्थिति क्या है, clinical situation क्या है. पर आम तौर पे अगर आप 100 लोगों को लेंगे तो I won't say that more than 5% of people would be heartburn as a symptom would be produced by people because of cancer. ठीक है, तो टाइम ही नहीं दिया, खत्म हो गया.